मीनाक्षी जी, आपका हम लोग मॉक स्टार्ट कर रहे हैं। रेस्पेक्टेड कुमार त्रिपाठी जी स्टार्ट करेंगे, फिर हम 1 बाय 1 करके आपसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। आप अपने हिसाब से आंसर करिएगा। प्लीज कंटिन्यू प्लीज सर। Okay, sir. Thank you. Good morning, Minakshi. Good morning, sir. Actually, what is the difference between common intention and similar intention? Sir, in common intention is provided under Section 34 of Indian Penal Code, and similar intention is provided under Section 35, 36 of Indian Penal Code. Sir, in common intention, there is prior meeting of mind between the persons. However, in similar intention, there is no prior meeting of mind. Okay, what is the difference between IPC Section 34 and Section 149? Sir, Section 34 is a rule of evidence. However, Section 149 is a substantive offence. And there are two or more persons are needed in Section 34. However, on the other hand, in 149, five or more persons are there. In Section 34, there is no specific offence which is required to be committed by any person. However, in Section 149, there are five kinds of offences provided in the Indian Penal Code. What is your hobby? Sir, I like to spend my time with my parents, and I used to write the diary writing. What do you understand by vicarious liability? So vicarious liability, so one person does any act on the behalf of another, then the person on whose behalf he acted cannot say that he's not the authorized person. So, for example, the principal will be liable on the for the act performed by the agent. Okay. Thank you, Minakshi. Now I would like to request Jan sir. Sir, please continue the interview. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Is there any difference between field book and a record of rights? That is khasra and khatani. Yes, sir. Sir, khasra is sir. Field book is the foundation of record of rights. It mentions only certain things like the agricultural crops and the name of the tenure holders. It is a foundation of record of rights. However, on the other hand, record of rights is a thing in which all the things are mentioned, like the right and liabilities of the persons, and rent and revenues which they are entitled to pay. So and it is provided under Section 31 and 32 of Land Revenue Code of 2000. Minakshi, what taxes to be imposed by the municipality? Sir, there are certain tax which can be imposed by the municipality. That is house tax, water tax, and scavenging tax, and okay. Can you define master plan? So Section 8 of Urban Planning and Development Act provides the master plan. It is prepared by the Development Authority, and it contains the things like the zones within which a district can be divided, the manner in which the planning is to be done, and the stages by which the planning is to be carried on. That is the master plan. Okay, Minakshi, thank you so much. I would like to request Ravi sir, kindly proceed directly. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Very good morning, Minakshi. Good morning, sir. Minakshi, what do you understand by the Act of Sexual Harassment of Women at Workplace Act? And why there is a need to implement such kind of act in the year of 2030? Sir, in 2012, a Delhi gang rape case was done in which a serious offense was done. After that, on the recommendation of Justice Verma committee, there were a lot of amendment was done in penal provisions. And sir, uh, before sexual harassment of women in workplace, there was guidelines of Honorable Supreme Court, like Vishakha case guidelines, and these were drafted in a form of act in the form of Sexual Harassment of Women Act at workplace. These it will deal only with the women who are employed at a workplace or a domestic work. Okay. Minakshi, have you heard the word of dowry? Yes, sir.
My question is to you कि what comes within the purview of the definition of dowry? So, sir, anything given or agreed to be given by one party to the marriage or to the other party to the marriage, and uh, at, before, or any time after the marriage comes under the dowry, but it does not include the dower or meher given under Muslim law. Okay. Kindly explain the concept of reference under CPC along with order, sections as well as rules. So, Section 113 of Code of Civil Procedure provides the reference, provision for reference. Sir, when a case is pending before the court and court is of the opinion that there is a question of validity of any act, ordinance, regulation, or which is not, which is invalid or inoperative but has not been so declared by the highest court, and it is necessary to determination of that question to dispose of the case, then the subordinate court can refer the case to the high court for the determination of the suit, and it is dealing with under order 46. If I am not wrong, I think it is 646 order rule, order number 46 of Code of Civil Procedure. Okay, Minakshi, in how many ways the offense of abetment may be initiated? Okay, so, sir, there are uh, three circumstances in which amendment can be done. As provided under Section 107 of Indian Penal Code. The first one is by intentional aid, by instigating someone to commit an offense, by conspiracy to commit an offense, by giving intentional aid to commit. Okay. Minakshi, my last question is to you. कि under the Hindu Succession Act, what are the classification in whom the property may be devoluted from one person to the another person? I think there is a classification in context to the heirs. Yes, sir. Sir, there's first of all the it will be seen that whether there how many persons are there which belongs to class one heir. If there is no class one heir, then it will be seen that whether there are certain persons who belong to class two heir. And if there are no class two heir, then it will be seen that whether there are any cognate, sorry, agnate. And if there were no agnate, then it will be seen that there is any cognate, and if there is no cognate, then the property will go to the government, which is known as estate. Okay, thank you so much, Minakshi. Now I would like to request Honorable Satin sir. He will continue with you. Okay sir, thank you. मीनाक्षी जी आप कंफर्ट हैं आगे? Yes sir, मैं कंफर्ट हूँ. आप उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं। जी सर. बुलंदशहर का नाम बुलंदशहरी क्यों रखा गया? इसके पीछे कोई कारण है? सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसका नाम पहले बेरोन करके कुछ था, तो लेकिन अब इसका बुलंदशहर क्यों रखा गया सर, ये मुझे जानकारी में नहीं है. अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपको किसी राज्य की महिला राज्यपाल बना दिया जाए, ठीक है? तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या-क्या होनी चाहिए? 35 years of age, citizen of India, and must be a member of Council of States. ओके। आप मुझे बताइए अभी हाल ही में आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को लीगल टेंडर से बाहर कर दिया। तो यहाँ पर एक वर्ड आया लीगल टेंडर, इसका मतलब क्या है? सॉरी सर. अच्छा, आप मुझे अभी आपने देखा होगा राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी उन प्रधानमंत्री की, तब उनसे रिलेटेड कुछ अपराधी व्यक्ति को अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया है। तो आप मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट ने किस पावर का यूज़ करके उनको रिहा किया है? The Supreme Court exercised its power under Article 142 of Constitution of India, which provides that the Supreme Court may grant any decree, judgment or order for doing the complete justice. अच्छा आपने देखा कि कोरोना जब हमारे देश में था, हमारे देश के साथ-साथ काफ़ी बड़ी मात्रा में ये विश्व के अन्य देशों में भी था।
तो इससे हमारे देश पर कोई एक मेजर इम्पैक्ट बताइए जो सबसे ज़्यादा आपको लगा हो कि ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी कंट्री पर इससे पड़ा है। सर, कोरोना वायरस आने से सबसे अच्छा इफेक्ट हमारे ऊपर ये पड़ा है, हमने अपने को आत्मनिर्भर बनाया है। हमने मेडिसिन को डेवलप किया, कोवैक्सीन, कोविशील्ड हमारे देश से दूसरे देशों में गई, तो इससे हमारी इकोनॉमी में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। एंड इफेक्ट क्या पड़ा? सर, इफेक्ट सर हमने बहुत सारी पॉपुलेशन खो दी, आई थिंक। पर सरकार ने तो कहा है कि हमारे कोई कोरोना की वजह से किसी की डेथ हुई नहीं। नहीं सर, रिपोर्ट्स के अनुसार बहुत सारे लोगों की डेथ हुई सरकार है। ने तो एंड यूपीएससी चेयरमैन कौन है अभी? सर, श्री मनोज सोनी। एंड बस मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चंद्रयान 3 इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है? आप मुझे चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान 2 के ईयर बता दीजिए बस। सर, चंद्रयान 1 2008 का है और चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ था, जो फेल हो गया। लेकिन चंद्रयान 1 से हमें ये पता चला कि चंद्रमा पर पानी भी उपस्थित है। अच्छा, चंद्रमा पे पानी उपस्थित है। चलिए, आप मुझे अपना रोल नंबर बताइए। सर, 005051। एंड योर डेट ऑफ बर्थ? सर, 21 सितंबर 1996। मीनाक्षी जी, आपका मॉक यहीं पे कंप्लीट होता है। मीनाक्षी जी, कैसा लग रहा है आपको? सर, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, कल से बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा था। क्यों? सर, ऐसा लग रहा था कि बोल पाऊंगी कि नहीं, चीजें याद आएंगी कि नहीं, इतना सारा सिलेबस हो गया है सर, बहुत। पर हम लोग तो आपसे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। सर, आप जो कहेंगे मैं वो इम्प्रूवमेंट कर लूंगी, लेकिन मुझे अपने बिहाफ पर ऐसा लगा है कि मैंने काफी हद तक क्वेश्चंस के आंसर अच्छा, किए हैं। ये वाली लाइन मैंने जानबूझ के आपको देखना चाहता था मैं कि आप कैसे, आप बहुत मतलब हम सब लोग आपसे बहुत सेटिस्फाई हैं, ठीक है? ये पहले लाइन मैंने जानबूझ के बोलनी चाहिए थी कि मैं देखता हूँ कि क्या एक्सप्रेशन रहेगा आपका। बाकी हम अभी सुबह से जितने मौके हुए हैं आपका सबसे बेस्ट है और बहुत अच्छा था, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। बस एक छोटी-सी गलती हम लोगों ने पकड़ी है, वो है आई कॉन्टैक्ट, ठीक है? उस पे थोड़ा काम कर लीजिएगा आप, ठीक है? मीनाक्षी जी, उम्मीद करते हैं कि डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन होगा और डेफ़िनेटली आप सर, डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं और इसी बेस्ट विशेस के साथ हम आपको शुभकामनाएँ देते हैं कि आराम से जाइएगा। डेफ़िनेटली आपको यदि कोई क्वेरी हो बीच इन बिटवीन तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेना, परेशान मत होइए, ठीक है? ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर।